stones with the stones. As we all know, like of my age group and of your age group, we started with the chalk and slate. Still, the chalk and blackboard concept is very much there in the country, but with the advancement of computer and internet, e-learning has progressed. Doordarshan started certain programs on subjects for the schools, which helped for more advanced e-learning techniques. Today, whether it is Vedantu, Byju's, Google, or any other app for e-learning, the students, they are taking full advantage of this. It's not only for the pandemic time, but even before pandemic time, e-learning was there. Correspondence study through dispatching of class notes, dispatching of books, and then having for a few days contact programs was the concept of 80s and 90s. Now it is the e-learning concept. We have e-books available, we have e-library, we have e-journals, and the slides and PDF through WhatsApp, Google Meet, GeoNet, Zoom, or some other techniques provide material for the students. It is up to you, young fellows, how much of this opportunity you can avail, how much knowledge you can extract by using these different methods. And e-learning has definitely helped in providing new informations, many informations, and the best information to the students. Today's webinar, I'm sure the resource persons will enlighten us about the advantages of e-learning and what new techniques we are going to get in the coming years, because this 21st century is the century of internet and of the sciences. How much progress? Now we don't have to go to the classrooms. Can we replace classrooms with the chips and with the computer and with the mobile phones? I'm sure the resource persons will discuss all this and enlighten us. I again congratulate Dr. Abhilashi Soni and Ankita Chaudhary for this webinar. My best wishes to all. Jai Hind, Jai Abhilashi University. Thank you, sir, for your blessing and valuable guidelines for us. Now, I'm inviting Dr. H.L. Sharma, special guest of this webinar. Please come and gratify us with your inestimable thoughts. Welcome you, sir. थैंक यू सर। इस वेबिनार में उपस्थित डॉक्टर R.K. अभिलाषी जी, चांसलर अभिलाषी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर L.K. अभिलाषी जी, प्रो चांसलर अभिलाषी यूनिवर्सिटी,
डॉक्टर एच.एस. बनियाल, वाइस चांसलर अभिलाषी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अभिषेक सोनी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एनएसएस, और आज के रिसोर्स पर्सन इंजीनियर अभिषेक कुमार जी, मिसेज अंकिता चौधरी जी, मिसेज माधुरी वशिष्ठ जी, और प्रिंसिपल श्री रंजीत सिंह जी, और इस वेबिनार में उपस्थित सभी वॉलंटियर्स और फैकल्टी मेंबर्स। मैं सबसे पहले अभिलाषी यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो आज के संदर्भ में तो सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है हमारा एजुकेशन का, जो ई लर्निंग, उस पर ये वेबिनार आयोजित हो रहा है। इसके लिए विशेष तौर पर डॉक्टर अभिषेक सोनी जी और उनकी सारी टीम बधाई के पात्र है। जैसा अभी तक बात हो रही थी, माननीय आर के अभिलाषी जी और डॉक्टर एच.एस. बनियाल जी ने जो इस पर प्रकाश डाला कि ये पेंडेमिक जब शुरू हुआ, इसको किसी को ये कभी भी ध्यान में नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी आएगी, लेकिन होता है समय के अनुसार। जब ये आई तो इसने हमारे जीवन को परिवर्तित करके रख लिया, अर्थात हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाए। और किसी भी संस्था, हमारी जो एनएसएस की संस्था है, किसी भी संस्था की जो वास्तविक जो परीक्षा होती है वो ऐसे समय में होती है क्योंकि जो संस्था अपने आप को समय के अनुसार ढालने में सक्षम होती है वही लंबे समय तक चलती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी संस्था इस परिवर्तित समय में अपने आप को ढालने में सफल हुई है। जब ये पेंडेमिक के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रभाव पड़े, लेकिन सबसे जो अधिक प्रभाव पड़ा वो शिक्षा जगत में पड़ा, क्योंकि जैसे अभी माननीय वाइस चांसलर जी कह रहे थे कि हमारी शिक्षा पद्धति कैसी थी शुरू से, लेकिन समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता गया। तो इसलिए जो हमारे वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हम क्लासरूम टीचिंग में निर्भर करते थे। तो ये जो पेंडेमिक आया, इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो क्लासरूम टीचिंग के लिए था, और उसके लिए केवल एक मात्र हमारे पास साधन था, वो ई लर्निंग का था। जैसे वाइस चांसलर जी ने कहा कि हमारे भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि कई जगह हमारे कम्युनिकेशन वो साधन नहीं है, कई डिफिकल्टियां है हमारे बीच। लेकिन मैंने जैसा कहा कि किसी भी संस्था का वास्तविक परीक्षण तभी होता है जब उसके सामने चुनौती आती है। तो हमने इन चुनौतियों को बहुत सफल तरीके से पार किया, और आज हमें जैसे अभी भी हम बात वेबिनार कर रहे हैं, तो ये एक इस सफलता का एक परिणाम है। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी क्लासरूम जो टीचिंग है वो खत्म हो जाएगी। ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा उसके बाद क्लासरूम टीचिंग दोबारा से शुरू, क्योंकि किसी भी व्यवस्था की अपनी अपनी एक खूबियां होती है और उसमें प्रत्येक व्यवस्था में कुछ कमियां भी होती है। तो जैसे ई लर्निंग जब हमने शुरू किया तो इसमें कुछ कमियां भी है, लेकिन उन कमियों को हमने ओवरलुक करना है, उसको पार करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम क्लासरूम टीचिंग में वापस आएंगे तो इस ई लर्निंग को हम उसके साथ साथ चलाएंगे, क्योंकि ये उसमें एडिशनल हो जाएगा हमारी टीचिंग के लिए। हम क्लासरूम टीचिंग भी करें और ई लर्निंग भी साथ में करें, तो ये हमारी टीचिंग लर्निंग और टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको एक ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायक होगा। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसके लिए मैं रिसोर्स पर्सन से थोड़ा सा आग्रह करना चाहूँगा कि जब इसके बारे में बात करें आगे तो प्लीज़ जो, क्योंकि ये इसकी अच्छाइयाँ तो हमको मालूम हो रही है, लेकिन जो इसमें थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स है उसके बारे में प्रकाश डाले, ताकि कि हम
उन शॉर्टकमिंग्स को, उन कमियों को कैसे पार कर पाए, उसके लिए हमें थोड़ा सी जानकारी प्राप्त हो। तो इस अंत में विशेष तौर पर दोबारा से मैं अभिलाषी यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट को और एनएसएस इकाई को और अभिषेक सोनी जी को विशेष तौर पर बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि ये इस तरह के टॉपिक को उन्होंने सामने रखा और इस वेबिनार को आयोजन किया। और मैं एनएसएस की स्टेट की ओर से, स्टेट अथॉरिटी की ओर से मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी को किसी भी प्रकार की जो किसी सहायता की जरूरत हो या किसी मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये वो अपने जो कार्य है एनएसएस के उसको सफलतापूर्वक करें। तो अंत में मैं सभी मैनेजमेंट का और जो उपस्थित रिसोर्स पर्सन है और जो हमारे प्रतिभागी है जो इस वेबिनार में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपके जो हमारे मार्गदर्शन किया आपने। मैं यहाँ आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जो हमारी अभिलाषी शिक्षा समिति और जो हमारा अभिलाषी का ग्रुप समूह है, जो हमारी मैनेजमेंट है सर, जब भी हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारी मैनेजमेंट के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से भी, जो बच्चों को हमारे ऑफलाइन में क्लासेस लगती थी, बिल्कुल वही माहौल हमारी मैनेजमेंट के द्वारा जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उन सभी बच्चों को ऑनलाइन घर पे बैठ के भी पूरा क्लास का ही माहौल हमारे जो अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा मुहैया करवाया गया है। गूगल मीट हो गया सर, हमारे पास टेस्टमोजी हो गए, जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं हमारी मैनेजमेंट के द्वारा जस्ट हमारे लॉकडाउन शुरू होने के तुरंत बाद ही एक्शन में आते हुए सभी जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन के माध्यम से ही शुरू कर दिया, ताकि जो हमारे बच्चों की पढ़ाई है वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो और वो सुचारू रूप से चलती रहे। और अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 2001 से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये अभिलाषी यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है, ये पूरे प्रदेश और जो नॉर्थ हमारा है वहाँ पे टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में काउंट होती है सर। और जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, उन बच्चों को ई लर्निंग के माध्यम से किस तरीके से और बेहतर रूप से पढ़ाया जाए उसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। साथ ही साथ सर मैं आपको एक यहाँ पे और इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, हमारी मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल के टाइम, जो बच्चों के प्रैक्टिकल होते थे उसमें बहुत दिक्कत आता था कैसे करें, तो वहाँ पे जो हमारे अध्यापक गण है वो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करके बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप और लाइव में उनको प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करने हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन बच्चों को प्रैक्टिकल का भी ज्ञान दे रहे हैं। थियोरेटिकली तो बच्चों को प्राप्त कर सकें, और यही हमारी जो अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का और अभिलाषी यूनिवर्सिटी का ध्येय है कि उच्च गुणवत्ता ही हमारा जो मुख्य टारगेट रहती है सर, वो भी 100% है। इस जो कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे कहीं भी अगर प्लेसमेंट ना हो तो अभिलाषी यूनिवर्सिटी और अभिलाषी ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जितने भी बच्चे थे उन सभी को विभिन्न विभिन्न संस्थाओं में, कंपनियों में अभी प्लेस कर भी जा रहा है। तो सर इसके लिए मैं अभिलाषी विश्वविद्यालय की पूरी मैनेजमेंट को भी आभार करूंगा, जो हमें इस तरीके से प्रोत्साहन करते हैं ताकि हम इस तरीके के नए नए कार्यक्रम और बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए, और जो इल्ड है सर, तो इसी के साथ साथ आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें गाइडलाइंस दी, और आपका मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू Now वेरी मच। I am moving right along toward the resource person talk. I mean inviting our first Genius International Public School pursuing PhD from career point
She having 12-year teaching experience now of Charter School and Genius in Public School. Thank you so much. Thank you so much, Abhishek ji, for a wonderful introduction. Before I should start my presentation. Ma'am, the sound is not audible. घट घट में तू बस रहा, तेरा रूप अपार, दया करो परमात्मा, तुम सबका आधार. During this pandemic, we pray to Nirankar that every being of this cosmos may lead a healthy, wealthy, and prosperous life. Good morning, and then Nirankar ji, to all the dignitaries present here for this webinar. Blessings of Nirankar, I'm going to present my views on the topic which I have entitled here in my presentation. So you can see here, I can say that the burning topic, pronunciation in the English language. So before we should go through, before we should learn some speech rules, some symbols of how pronunciation in the English language is made. You can see here into the slide that so many words are appearing here. So things starts floating like this into our mind when pronunciation words strikes. So when so many things comes into our mind simultaneously when we talk about pronunciations. So I will try to resolve the problems of pronunciation at some extent I can see. Not completely, but yes, I will try here to resolve whatever issues learners, students, teachers face. So here I go. So there are 3 levels of English pronunciation. We have 3 categories. One level is people don't understand actually what you want to say. This is one category, and you use wrong sounds in English words. This is the level 1. It's people don't understand what you want to say, and you use wrong sounds in English words. This is the level 1. And in level 2, people understand what you want to say, but it's unpleasant to listen to you. Means they are now more interested to listen to you. In the third category, in the third level, we can say people understand you and your English language is pleasant to listen to. Means they wanted to listen to you. They are completely understanding what you are trying to convey. This is the level 3. So everyone wanted to be in the level 3. Everyone wanted to be that they should be in level 3. They wanted that people should make them understand, as well as people love to listen to them. So how it is going to be possible? It is going to be possible when we have a desire to change ourselves. Because change begins with the desire to change. Nobody can change us if we are not having desire to change ourselves. And when we combine our desire with proper instructions, with proper practice, that will definitely lead us to success. So we can say that the key to learning to speak English clearly and correctly is training and practice.
Training means proper training. So clear and accurate speech comes from learning by doing. Now, what experts says? Auto-Jesperson, I've taken the statement of Auto-Jesperson here, you can see into the screen. If we know the sounds of a word, we can know how to spell it. If we know the spellings, we can know how to pronounce it. This is the problem people encounters. Another statement which we have taken is Montfolic. Montfolic says that English spelling is almost diverse from its pronunciation and forms hardly a guide as to how words should be pronounced. Very well said. Very well understood. We all know that this is true and absolutely true. Because English spelling is saying something different, pronunciation is something different, so people, get confused into that. When a person learns English, what is the reason behind it? Why it happens so? When a person learns English as a second language, and we are learning English as a second language. So when they are learning English as a second language, they are speaking English filtered. And they are filtering English through their first language. They are using their native language speech rules of pronunciation on their new language. And they are not aware of the American or British speech rules. This could be the reason. As we all know that English is an international language and taught around the world. But regret to say, few of them address speech rules or few of them knowing the speech rules. This is because many of the teachers who are providing English training do not know of these speech rules. I said many of, not all, many of. So, before we should learn those speech rules, let's define what the pronunciation is. Pronunciation is the act of producing the sound of speech is called pronunciation. Means how we are producing the sounds of a particular language. In a lot of languages, we have saw that each letter represents only one sound. For example, in Hindi, one letter represents one sound. So it's very easy to pronounce words just by looking at how the word is spelled. But English is not like that. When you see letters in an English word, they won't always be pronounced the same way. For example, I have taken the example here, letter C. In the word letter C, how it is going to be pronounced? It's going to be ka, ka. The sound is ka, but it is different to the word place. Here it is sa. And when C is next to H, what will happen? It will convert into cha, like in chocolate. But in the word egg, it's pronounced as K again. So this is the problem of the language, English. So there are many strategies for making the pronunciation better, but the International Phonetic Alphabet is such a great tool for students to practice this pronunciation with. Now you can see here into the slide, International Phonetic Alphabet. International, we are aware. Alphabet, we are aware. And the word, phonetics. Phonetic word, it's better we should understand before we should jump over the symbols,
speech rules, and all. So phonetic is representing the speech sounds with a set of distinct symbols and each designating a single sound. Means each symbol is going to differentiate a single sound. Now, International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet, in short, we can say that IPA. It is an alphabet, if we talk about the history, it's developed in 19th century to accurately represent the pronunciation of languages. One aim of the International Phonetic Alphabet was to provide a unique symbol for each distinctive sound in a language. And that is every sound or phoneme. Phoneme is the smallest unit in a language that is capable of conveying a distinction in meaning. For example, m of mat, b of bat. So that serves to distinguish one word from another. In the IPA, every sound has a unique symbol. As I have already told, every sound, each and every sound which is coming from our mouth has a unique symbol. So when you read it, you know exactly how to pronounce the English words. For example, I have taken 3 words here. Though, thought, calf. These are the 3 different words, but all have the same letters. Can you see the similarity between these 3 letters? Is there any similarity you can see? Yes, there is a similarity of letters. Letters O-U-G-H in the first, in the second, again O-U-G-H, in the third, O-U-G-H again. So O-U-G-H in the first, O-U-G-H in the second, and O-U-G-H in the third. But they are pronounced differently. They are having the different pronunciations. In the first, when it is meeting with TH, it's though, next is thought, and last one is calf. So here I have written the symbols also, phonetic symbols. Now, you can see here, this is phonetic chart. So at a glance, it seems a little bit scary. Phonetic chart seems scary only. Otherwise, it is very helpful if we are going to comprehend this, if we are going to understand these symbols. Because this is the main root of pronunciation. You can see here vowels, diphthongs, and consonants. Vowels, diphthongs, and consonants. So one by one we are going to discuss, and in the last, I hope you are going to comprehend each and every symbol. So there are 26 alphabets in English, as everyone is knowing this. In the lower classes, our teachers has told us that, yeah, 26 alphabets in English. But there are 44 sounds. Now, let's discuss about vowels. What the vowels are. Vowels are a speech sound produced when the breath flows out through the mouth without being blocked by teeth, tongue, or lips. Means breath
will come out very smoothly. Vowels are pronounced very smoothly. And the air is not going to be blocked by teeth, tongue, or lips. Now, we are going to see that you can see the phonetic chart here, phonetic chart of vowels. So, in the lower classes, our teachers has told that there are 5 English vowels. Everyone is knowing this 5 English vowels, that is A, E, I, O, U. So these we have heard so many times, but teachers has not, might be, I cannot say they have not told you, might they have told you and might not. So A, E, I, O, U are 5 vowels, but there are 12 English vowel sounds. And from these 5 vowels, the sounds comes. Some of them are long vowels and some of them are short. So vowel sound, as I have already told you, comes smoothly from the mouth. So these are, we can say that the smooth sounds. Now, one by one, we are going to pronounce. You can pronounce with me. Now I'm going to pronounce these symbols which you can see into the slide. I'm going to start horizontally, okay? Horizontally, I'm going to read this. The first one is E. The first one is E. Twice I'll pronounce one sound. Next is E. E. Next, U. U. Next, U. U. Next, A. A. Next is Next, lengthened. Not it's lengthened. We will have to lengthen this. Next is, you can see here 2 dots or colon. You can see these column shows that the vowel is going to be lengthened. We will have to lengthen that vowel. Next is O. O. Next, A. A. And this is going to be strong. This is going to be strong. And then and the last one is between A and O. It's going to be O. O. Now we are going to see these vowels with examples. So the first one was, you can see here in the side, I have written vowels, and on the other side, you can see the examples. The first one is I. I. Pen. English. When. Next is E. E. C. B. Next is U. U. Look. Put. Could. Next is Oo. Oo. Blue. Fool. Eh. Eh. Bed. Head. Next is the woman. Lengthened word. Heard. Next is lengthened or
or, board, door. Next is a, cat, cat, bag. Next is strong, strong, cut, come. Next is car, art. And the last one is between a and o. Club, what. Now, next comes diphthongs. So, diphthongs, this is also another group of vowel sounds called diphthongs. So these are those sounds that change from one vowel sound to another. It changes from, means both are going to be vowel, but it will change from one to another. So here I'm going to pronounce one by one horizontally. You can pronounce with me. The first one is, these are phonetic symbols which we are learning, and through these phonetic symbols we are going to come to know about how a particular word is going to be pronounced. So the first one is yeah. Second, yeah. There is a slight difference, okay? The first one was yeah. And then second, yeah. Next, Next is ow. Next is ow. Next is I. Next, I. And the last one is oi. Now we are going to see all these symbols with example. So, first one was yeah. The first one, yeah. Example, you can see here, dear. Next sound, yeah. Care, air. Next is poor, ensure. Next is ow, round, doubt. Next is ow, now, road. Next is I, take, wait. Next is I, 5, height. And the last one is oi, noise, boy. So these were the vowels, diphthongs. Now comes consonants. So consonants are produced when the air stream is obstructed in the vocal tract. When the vocal tract is obstructed, at that time consonants are going to be produced. As we have already gone, that vowels are, come very smoothly from our mouth, very smoothly. But consonants are different. So consonants are produced when the air stream is obstructed. So consonants can be characterized into three different phonetic properties, we can say that. The place of articulation, you can see here, the manner of articulation, and the voicing. But before we should jump over the next slide, you can see here with the diagram, I've shown you the diagram from different parts, how the sound is coming. So place of articulation.
place of articulation. For example, when we speak ta, ta, or t, ta, we raise our tongue and make it tap the spot between the palate and the alveolar ridge. Okay, so that is the place of articulation. We raise our tongue and make it tap the spot between the palate and the alveolar ridge. So that is place. Now, the manner of articulation. Manner of articulation means in which manner a particular consonant is to be spoken. For example, b, b is spoken only when we close both the lips tightly and then open them to let the flow of air escape into the atmosphere. So that is the manner of articulation. Voicing is the third one. So voicing means sound which are made with vocal fold vibrates. That is voicing. Now, you can see here into the slide, the top row I have highlighted. That means the top row are unvoiced consonants. Moving from the back of your mouth throughout your lips. But there is one more letter or symbol you can see here in the third row. So that is also highlighted. That is also unvoiced. So one by one, we are going to learn how these symbols are going to be pronounced. Later on, we are going to see all with examples. So consonants, all the rest of the consonants means apart from the consonants which were representing the top row, they were unvoiced. Now the next are voiced, which you can see are highlighted here. So all of the rest consonants are voiced, which means that the sound made with vocal cords. When your vocal cords are going to vibrate, then the sound is going to be made. Now we are going to learn these symbols with examples. You can pronounce with me. Now, horizontal, first row, highlighted row. These are, remember, these are unvoiced, okay? Which means that the sound is made by air moving from the back of your mouth throughout your lips. The first one is pa, pa, play, stop, pen. The next is fa, fry. Next is ta, ta, 10, little, take. Next is tha, tha, method, both. Next is cha, cha, chair, match, chit. Next is sa, sa, small, seen, sip. Next is sha, sha, shell, machine, shut. Next is ka, ka, character, quick, cat. Next is, in the last row, highlighted one, unvoiced, ha, ha, hot, hair, hole.
Now comes voiced consonants. So in voiced consonants, you can see that all the rest of the consonant sounds are voiced, which I have mentioned here, and which means that the sound is made with vocal cords. Now, vocal cords are going to vibrate. When you have to produce consonant sounds, there is a blockage of air in the mouth and then release of air. You will feel this when you will pronounce these symbols, and with examples, we are going to see this. So you can pronounce with me time and again. I'm saying you can practice with me. So first is highlighted one. These are voiced. Highlighted b, b, bad, baby, wah, wah, when, over, duh, duh, day, bed. Next is the, they, father. Next is j, just, age, soldier. Next is z, zebra, zero. Next is z, measure, leisure. Next is g, got, goes. Next is ma, moon, lamp. Next is na, name, pneumonia. Next is ing, string, bring. Next is real, wrong. Next is look, small. Next is window, tween. And the last is ya means yes, ear. So these were consonants, vowels we have gone through, diphthongs we have gone through. Now we are able to learn, we are able to pronounce. So phonetic transcription. So phonetic transcription is the visual representation of speech sounds, as we know that. You can, you have, in the earlier slides, you have saw that I have put the letters into 2 slashes. So what is the meaning of these 2 slashes? Actually, the International Phonetic Association recommends that a phonetic transcription should be enclosed in square brackets. A transcription that actually specifically denotes only phonological contrast may be enclosed in slashes. That's why I have enclosed this into slashes. So if one is unsure, it is best to use brackets since by setting off a transcription with slashes. So one makes a theoretical claim later on that every symbol phonemically contrasts for the language being transcribed. So that's why we have put this into slashes. So one of the word I have taken here, clean word. So how this clean word is going to be pronounced? You can see that in dictionaries also, in symbols, the pronunciation has been written. So now you are able to learn that. Now you are able to comprehend that. Now you are able to understand that. So clean is made up of 4 sounds. What 4 sounds are involved in that pronunciation? First one is k, that is unvoiced consonant. Then la, voiced consonant.
and then E, that is a vowel sound and lengthened vowel sound, and then N, that is voiced consonant. So here is an advice for the teachers and learners of English. Use standard dictionaries. Use the IPA to show how words are pronounced. In the standard dictionaries, you can see that the IPA symbols are there. So from there, you can practicize yourself. So when you are a first learner, if you are a first learner or you are a beginner, you can practice first with English spellings rather than, doing practice on phonetic spellings. So the symbols of IP are actually a little bit complex. So that may be difficult for a beginner to understand. So you can practice it by writing English spelling. And then next advice is that look at the words in a dictionary. Okay, look at the words into the dictionary to get a sense of how to use phonetic spelling. And then what you can do, you can copy the favorite words or favorite words, and you can note down that. And then later on, you can practice that loud based on the phonetic spelling. Focus on the sound of the words, okay? Focus on the sound of the words rather than the spelling of the words, as you know that English is a complex language. Practice makes man perfect. Everyone knows this, because there is no other alternate of a practice. You will have to practice if you wanted to achieve anything in your life. Even your English level is high, you can lose your phonetic skills if you have too little practice. So you will have to keep yourself engaged in practice. Read aloud or in a whisper and repeat the words which you find difficult to pronounce. Read it twice, thrice. Take it in a practice. Recite poems, or you can sing a song, observing the rhythm and intonation. Speak English to your friends whose English is good or better as compared to yours. Just for fun and practice, the learner should be able to distinguish between vowel and consonant letters. You should discriminate. If learner is going to understand, or learner is going to be able to distinguish or differentiate between what is the difference between vowel and consonant letters, then it is going to be easy for a learner to understand, to comprehend. The learner should be able to identify how many syllables a word has. Syllable means a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants, forming the whole or a part of a word. For example, water, 3, free, tree. So these are having one syllable. Now comes the tongue twister. Tongue twister is going to help you out. When sometimes what happens, you say that, oh, it's a slip of tongue. I'm not able to pronounce a particular word. All of a sudden, I need a practice or something like that. You didn't get confidence. Your tongue is not used to of that particular word. So tongue twisters will work as a remedy. So 2 tongue twisters I have written here. You can practice. And then what will happen? The results are going to be in front of you when you will practice it. Your tongue is going to feel easy to roll, to pronounce any of the difficult word. So first one is, Betty bought a bit of butter, but that bit of butter was so bitter, so she went to buy a better butter to make bitter butter better. First of all, you will have to practice in a slow motion, then you will have to increase the speed like this. Betty bought a bit of butter, but that bit of butter was so bitter, so she went to buy a better butter to make bitter butter better. Then Betty bought a bit of butter, but that bit of butter was so bitter, so she went to buy a butter to make bitter butter better. Betty bought a bit of butter, but that bit of butter was so bitter, so she went to buy a better butter to make bitter butter better. This is how you will have to practice. And then the next one is, Peter picked a peck of pickle. Peter picked a pickle. Peter Piper picked a peck of pickle. So this is how you will have to
practice. Now, as we all know that this is the era of technology. So everyone is having mobile phones, everyone is having Android, iPhones. So you can download the app English Phonetic Pronunciation. This is my suggestion to you. And you can also use an online translator to translate words into phonetics. So for today, this is all. Woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep, miles to go before I sleep. So as we all know that English is a vast language. So we have taken, or I have taken a drop from the ocean only. So thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Abhilashi. Thank you very much, ma'am. Now, I'm introducing our second speaker of the day, Engineer Abhishek Kumar, Assistant Professor of Computer Science Engineering, Abhilashi University. He done his BTech from Himachal Pradesh University, Shimla, and MTech from Punjab Technical University, Jalandhar. He worked on many projects as Excel 21C notes, Excel 21C recommendation, ethics of life science, fantasy piece, digital image, and so many more. So here I'm inviting you, sir. Please come and share your valuable points with all us. Over to Engineer Abhishek Kumar, sir. Presentation visual memory. Hello, and Good morning, sir. myself Abhilashi Kumar. Today I am grateful for having an opportunity to speak about financial freedom and how to achieve that financial freedom using web technologies. So, these are the two things which we will discuss. First is the financial freedom and how to achieve that financial freedom using web technologies. In 2015, it was the first time when I heard the term financial freedom from my mentor. Is Robert T. Kiyosaki, and Japan is American, and all the presentation I have made is using a lot of terms as discussed by my mentor. So the first question is, what is the financial freedom? Let's see. We all have some kind of living expenses. There is expense related to food, shelter, clothing, lighting, education, and a lot of all the things. We give some rent, we pay for our internet bills, electricity bills, transportations, and a lot of things. These are all our living expenses which we have to cover monthly on the monthly basis. So if I assume all this taking money, the currency, and let's assume total amount of money for a person is 30,000. He needs 30,000 to cover all his living expenses as discussed on the left hand side. So I would say the person is financially free when all that 30,000 he need not to work actively. That is, he need not to go to job from 9 to 5 a.m. all that things. He need not to work for money. Instead, he will develop some kind of asset which will put that fixed amount of money in his
bank account or in his pocket. So that is financial freedom. You don't work for money, but let the money, let the assets work for you. So there are two things. First is the financial independence, and second is the financial freedom. These two things are related. And if I talk about financial freedom, let's discuss what is it. Financial freedom, there is a main concept called asset, and my mentor West describe it as asset is something which put money into your pocket. And on the contradictory of this is the liability. Liability is anything which take money from your pocket. So to achieve the financial freedom, we need to focus on the assets. In the coming slides, upcoming slide, we will discuss what are the assets and how we can make use of those assets to achieve the financial freedom. And in this presentation, this is the cash flow diagram of the middle class person. Is all the money come from the main source of money for the middle class person is the income. He earns the salary, and that salary is his income. This is the income, and all the middle class persons, most of them have some kind of liabilities. Liabilities, maybe they might have bought the house on EMI, cars on EMI, some other kind of loans they might have taken, which they pay back with EMIs, and left the rest of the money they spent on their expenses, as discussed earlier, like food, shelter, and other expenses. And all of that, they left up with little or no money at all. But instead, here is the cash flow diagram of the rich persons. And here we can see the main source of income for the rich person is their assets. Their assets push money into their pocket. They need not to work actively for the income, like a job or anything. Their main source of income is their assets. They might have liabilities too, but their income from their cash flow from their assets is much more than their liabilities. So next question is, what are the top asset classes? Okay. First one is the paper assets. What are these? There is a term in India called National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. These are the two exchanges which offers the individual to be a part of companies using stocks. So stocks are the paper assets. Similarly, mutual funds. If you are having fixed deposit in our bank, it's also a kind of paper asset. Next thing is commodities. Commodities are also assets like gold, silver, crude oil, cotton, etc. We can also invest in these things, and these will also be the assets. Asset is the businesses. Big businesses, there are also kind of assets which push money into the pockets of their founders. In the digital era, the next kind of asset is the cryptocurrency. Cryptocurrency popularly are like Bitcoin, Litecoin, Filecoin, etc. If you have invested in these cryptocurrencies, these also act as an assets. And real estate, this is the oldest and widely accepted asset. Real estate, like commercial real estate and for rental income for families to live. We can also invest in these real estates. So these were the assets which puts money into the
pockets, and if we invest wisely into those assets, we can achieve financial freedom. Now, to get those assets, we need to some kind of amount money into our pockets. So to get the money, there are three ways to get the money. That is income. First is the earned income. Second is the portfolio income. Next is the passive income. So let's discuss one by one all these three modes of getting the income. So what is the earned income? First one is the earned income. It's basically a paycheck which we get from our job on a monthly basis, or it could be a contract which we have had with someone and he is paying us hourly, monthly, yearly basis. Earned income, we are actively doing some kind of activity, some kind of work, and we are getting paid as a compensation. We call it earned income. And this is the cash flow quadrant. And this concept was discussed by my mentor, and my mentor described there are 4 quadrants which we can classify the people. There are some people who we call employees. There are some people which we call self-employed. There are some persons which we earn them money from businesses, and someone we call investors. Employed, self-employed, businessman, and investor. These are the 4 kind of categories which we can classify the persons. And first one are the employees. Here is the policeman, as the teacher, engineer. They have their fixed job. They work from morning till evening for that particular job, and at the end of month they receive a paycheck. They are actively working for the job, and at the end of the month they get paycheck. It could be in lakhs, it could be in thousands, it doesn't matter, but they are actively pursuing that particular career and getting paycheck to paycheck on monthly basis. Second category is the self-employed. So what are the self-employed? For example, the lawyer. He has the skill in law, and he doesn't work for any institution, anything else. He works for himself. He decides what amount he would charge, and his own set of rules he decide. Similarly, for the doctors, they might have opened their clinics, and they are self-employed. Same case for the accountants, like chartered accountant. And if we relate this to day-to-day life, all the grocery stores, all those soaps, all those vendors which sell groceries also comes in self-employed. Self-employed means you are your own boss, and you need not to receive any kind of commands from anybody. You are the employing yourself. These are the second kind of categories. Next is the businesses, business persons. So there are a lot of businesses. Here I have discussed the IT company called Infosys, the two-wheeler motor vehicle company Hero Motoco, and the Asian Paints, the leading company in paints. So using businesses, some people also invest or create some businesses for different sectors. There are businesses related to health, infrastructure, related to IT, related to pharmaceuticals, lot of things. So we can create businesses and also get income from those mediums. And the last thing, fourth category of persons are the investors. Oh, and what are those investors? They invest in some kind of
financial assets like stocks. They might invest in stocks, real estates, gold, mutual fund, fixed deposits, etc. And they get consistent dividend and return, maybe capital appraisal on that particular asset. So these are the four categories: employees, self-employed, business owners, and investors to get the. And I was just talking about income, earned income I have discussed. And the next thing is the portfolio income. Portfolio, as I have discussed earlier, portfolio is generally the asset you own. You might own stocks of a company, you might own a real estate or a particular artifact. And if that particular asset value get increased and your investment also eventually increase. So these are the portfolio income. Similarly, the stocks, the fixed deposits comes under portfolio income. What is the passive income? And passive income is income which you need not to be actively work on. For example, if I bought a house and lease that house for the rental purpose, every single month I will receive the rent from my tenants, and that rent I call passive income. Similarly, if I wrote a book, any kind of book, and I get royalties from my publishers on each copy of the book sold, that royalties comes under passive income. Similarly, in case of a website, if I develop a website, any kind of website, and for every single month, if I get some kind of money from that website, I call that amount as the passive income. So the thing here is, in passive income, we work for 1 year, 2 year, 6 month, 5 month, and after that, we consistently get money from that asset, irrespective of whether or not we are continuously working on that particular project or not. So that is the passive income, and the goal of this presentation, the objective of this presentation is to help the listeners to get this kind of income from the website, from the personal website, that passive income. And if somehow we get 3 to 4 assets which continuously put passive money, passive income to our pocket, we can achieve financial freedom. We no longer need to work for someone. We are free to whatever we can do. Lot of things we can achieve with financial freedom. We are not restricted to time, how much time we have to devote to certain activities. Like in job, 9 to 5, that time's blocked. You are working from someone else, you're working for someone else, their dreams, and lot of things. So this is the passive income. And talking about our computer sector, IT sector. In IT sector, we are having earned income, which we can get from the job, or we can do a freelancing work. Freelancing work means, for example, a carpenter, he knows how to create the almirahs, chairs, etc. So I hired the carpenter, I provide him all the material, and for his skill, I pay him. He is not a permanent employee of my organization, but for a part-time, he's working from me. That kind of job, that kind of work, we call freelancing. Freelancers are paid for hourly basis, for project basis, but there is not particular restriction that for every month they have to be paid. But in job,
We have a fixed contract with the institution that we are providing our services, and at the end of the month or certain period, we get the paycheck. But in case of a passive income for the IT sector, we can create a personal blog, we can create an affiliate website, on which we can sell the products from Amazon, Flipkart, and we can also use ads from the Google using his platform AdSense. Similarly, if we having freelancing, we can do for university, we can create a university websites, we can create websites for friends and families, and we can also approach the vendors, local vendors, and for that we are having this particular set of skill set, we can create a website for you people. And from those persons, we can also get some kind of income. Or on the other hand, we can work for the freelancing websites like Upwork, like freelance.in. So the particular model which I will be discussing and I am using since 2016 to get this kind of passive income is the affiliate marketing. And what is affiliate marketing is, I am affiliated with Amazon and they have certain products, lot of products on their website, like laptops, like cameras, books, bags. And if I made a sale, if I recommend any of their product to any person and sale has been made, I get some certain kind of commission ranging from 2 to 8%. So first thing is I have to register for Amazon affiliate program. They give me the affiliate links, which I usually posted on my website. And if a visitor from my website made a purchase on Amazon, I get some certain kind of commission. So this is the model which I am using to achieve the financial freedom, to promote products, affiliating products on Amazon, Flipkart, or it could be any affiliate products, online e-learning courses related to anything. We can become an affiliate, recommend those products, and if someone from our website has purchased those products, we get fixed commissions. So these are the products I am right now recommending: the backpacks, laptop backpacks, books, laptops, a lot more. Here is my website, Alex21C recommendations, and in 2016, first month, January of 2016, I registered my website, and since then I am recommending products, and these are the categories: niche, headphones I am recommending, laptops, cameras, books, etc. A lot of things are out here I am recommending from my website. How do I recommend? I simply create an article post. This is out here the section of backpacks, and here is the title: what are the best fishing tackle backpacks? And right here is the thumbnail image, and this is the short description. Similarly, for the books, I have made article posts for the books, for the laptops, and if someone click on that post, you can see this is the product I am recommending, and below here I am having the affiliate links. These are the links provided by the Amazon, and if someone clicks on these links, that user will be redirected to the Amazon website, and if the sale has been made, I get paycheck as a commission. So this is the sample of a product from my website. This is the camera I am recommending on my website, and these are the affiliate links below to purchase this camera. Similarly, these are the books, and here below you can see
I am having the affiliate links to recommend this product. So, as I said, I am in this affiliate business since 2016-17, and I am affiliated with Amazon.com, a US-based Amazon company, and Amazon.in as well. And here is the record. This year, 2020, here are the commissions which I have collected from Amazon for the sales for the month Jan, Feb, April, up to so on December. And right how there I have not received any commission, but overall I have received $20 for this year. And for last year, 2019, you can see I have received a commission of $52 as the sales made by me. And similarly for Amazon.in, Indian-based Amazon website, last year I have made $45,000, and this is the chart showing the sales I have made. And for this year, 1200, around 1200. Similarly, the Google offers their advertisement network called AdSense, and you can recommend advertisement on your website and get paid. So Google also, by Google I have made around $28 using Google AdSense, and this is the passive income. No matter whether or not I am actively working on my website or not, till this website is on the internet, I will get my commissions. If any kind of sales has been made or advertisement, click or you try to use it. This is my website, and there is the article post related to backpacks, and on the right corner you can see the advertisement. This is the advertisement placed by Google on the website. If someone clicks on this link, I get commission ranging from $1 to $5. I also get paid इन्हीं ले गए थे नीचे कोई भी नीचे ले गए डीएम सर ले गए थे मेरे मैथ के पेपर में ना ये वाले पेपर को ध्यान रहा साइंस भी है. Similarly, this is on the right hand side offered by Google, and this is my website. If someone clicks on this advertisement link, I get paid, or I get paid for the views. And this is the financial freedom. And what does financial freedom means? I no longer have to worry about my finances. I am free to do what I want, and I so I need not to be actively work for money, and money is working for me. These are the concepts related to financial education, and to achieve that financial education, here is our second part, and the second part is the web technologies. In this section, I will discuss how to use those web technologies to achieve financial freedom. So let's discuss kind of web technologies, front end and back end. Front end web technologies are the hypertext markup language, cascading style sheet, and JavaScript. So we will discuss in the upcoming slide what these are. Similarly, on the back end, we have PHP and MySQL. First, discuss the HTML. What this technology is. HTML stands for hypertext markup language, and it provides the kind of technology to create web pages. All the web pages we see all over the internet, where we can share images, text,
graphics, videos, audio, etc. All those web pages are created using HTML. And these are the web pages which we can create, like the popular one, we visit YouTube. That's a kind of website, and it consists of a lot of web pages, similar for Facebook, for Google. Anything you search on the internet is having a website, and all that website is consist of a lot of web pages, and those web pages is created using HTML, hypertext markup language. And to view those web pages, or I can say to surf the internet, we need to have web browsers. These are the particular softwares, application softwares, or I can say utility software, which will help you to access those websites and render the content displayed or coded inside them. Popular one are from Google. Here is the Chrome. From Mozilla, it's the Firefox. From Microsoft, it's the Internet Explorer. So these are the web browsers which are used to access the websites from different devices, ranging from laptop to smartphones. Here I am discussing the basic example of how to design a simple web page using HTML technology. I am having a sample image of Apple on the right hand side here, and this is the basic paragraph I am having, and I want all this to be transformed into a simple web page. Let's see how to achieve this particular task. So I have written all the code in HTML for this particular scenario, and this is what the HTML code looks like, and it is out of scope to discuss what all these things are as of right now. So let's just continue. So this I have written all the HTML code, and when we see the source code, here is the image file as we discussed earlier, and all that text I have written inside this file, HTML file. And when we render the output using any of the web browser, here is the web page looks like. This is the heading, and this is the list of fruits, and this is the image. This is the sample web page created using HTML. Now one thing here is I have not stylized anything, like I can change the color of the background of the page from white to anything else, and similarly I can resize this image, but I have not done. HTML functionality is to define the semantic aspect of the web page. What are the headings? What are the paragraphs? What are the links, hyperlinks, all those things. HTML doesn't mean to describe the presentation aspects of a particular web page. So to define those styles, we are having cascading style sheet. This is the second technology, and its recent version is 3. It defines the presentation aspects of the web pages. So for our particular example, here I have created the CSS code file, and I have stylized something. I changed the background color of the page. I have resized the image and set the color to my heading 1. So this is what my final web page looks like. The image is relatively smaller and resized. I have changed the color of my heading, and similarly the background has been changed from white to bluish. So this is what the CSS does. Next technology is the JavaScript, and what does this technology do? I discussed with the example. Here is the example from Google website, and in this text box we put our queries. Whatever queries we write, we get some kind of suggestion. We can see if I type anything here, I get some kind of suggestions, and all those suggestions are being populated with the help of JavaScript.
Let's consider another example. This is the example 2, and we can see this is the homepage of our Google, and if I click this rectangular button over here, I get all those apps and services offered by Google. Let's see. After clicking this button, I get this pop-up dialog box over here, and all these services offered by Google showing here. Behind the scene, here is the JavaScript. So using JavaScript, we provide some kind of functionality, any kind of functionality. We can provide any kind of validation, like filling the registration form, any kind of form, and some other functionalities related to clicks, mouse clicks, touch sensitive events, any kind of event handling we can do using JavaScript. Now, talking about backend, we are having first technology is the PHP, stands for Hypertext Preprocessor, and around 1994, this technology before PHP, our websites were static. Static means there was no user-generated contents. Right now, there are a lot of user-generated content on the Facebook. We can post certain kind of images, anything we can post, images, comments, reviews for article posts. For the products we saw from the e-commerce, we can provide our reviews. Similarly, for YouTube, we can send comments, we can like, dislike certain posts. All that things is dynamic in nature, and a lot of user generated content is out there. So to get that kind of dynamic content, the first language was the PHP, and this is what we have used to develop our website. So what does PHP do? It is sitting, PHP lies on the web server. We will discuss later on what is web server, but for this slide, PHP, this technology is on the web server, and it is having access to all the images, all the source code files. Similarly, all the database where user generated data is stored, and all the functionalities can be accessed by PHP. And this is the client. These are the persons who are accessing our website from smartphones, from laptops. What they do, they get disconnected to this web server. On this web server, PHP handle all those requests and display the web pages or web services. Next technology is the MySQL. What MySQL is, basically it's a relational database management systems, and right now its parent company is Oracle. Oracle is providing this technology. So what is a database? This is what the database looks like. So we are having a lot of data, say our names, addresses, contact number, email, as textual data, images data, audio data, any kind of data, and all this data needs to be organized in a systematic manner in computers. So in a database we can store .data, and for websites we use MySQL to create those data in the databases. So this is how the MySQL interact. MySQL directly deals with the PHP, and the PHP fetch all the resources and displays them over the client in the web browser. So PHP is linked with the MySQL. All the data, whether it needs to be stored or retrieved from the database, PHP do all the work, and the final output we get on the web browsers. Next thing is the web server and hosting. What is it? What is a web server? It could be a hardware or it could be a software on which our website is hosted. Website means all the code files, all images files, graphics, everything is hosted on that particular server, and that server looks like something. This here is having our web server, and this web server is connected over internet, and all these
are the files, graphics files, code files, which are being hosted on this web server. Whenever someone client requests anything from the website, this web server provide all those resources and act as a base for hosting our code files. And next thing is we have to learn all these things. As I discussed, all these things are beyond the scope of this webinar to illustrate how to learn. You can learn from YouTube. There is an platform acquired by LinkedIn. It's called Lynda, or Udemy, Skillshare, Educator.com. From all those, we can get the digital courses, and we can learn from these. So here are the references I have used for making this presentation, and that's all. If you are having any queries, let me know. And that's all for today. Using all these things, we can achieve some kind of some kind of assets. That's all. Thank you, sir, for your motivation lecture. And now I am inviting our third and last speaker of the day, Miss Madhuri Vashisht, PGT, Genius International Public School, Net Chowk. She done her MCA from Kurukshetra University and BCA from Himachal Pradesh University, Shimla. Ma'am, please come and share your word with us. Over to Madhuri, ma'am. बोलो आवाज नहीं रही मैं क्या हेलो आवाज नहीं आ रही है करो आप करो ऑन ना Ma'am, it's not audible, ma'am. Please check, ma'am. Not audible, ma'am. No, ma'am. It's not audible. Hello. Audible, ma'am. Hello. Ma'am, yes, ma'am. Audible. Please, ma'am, continue. Okay,
audible. So just a second. Yeah, ma'am. हेलो Yes, ma'am. सर आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes. Okay. So I also thankful to our chief guest, Mr. H.S. Sharma, who spent his valuable time with us, and thankful to also our managing ma'am, Miss Ankita Chaudhary, who prescribed me for such a big environment. Thank you, ma'am. I will. सर आवाज आ रही है? I'm audible. I'm audible, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You may continue, ma'am. Okay. I welcome to all in this event. This is no doubt, in fact, that COVID-19 pandemic has created an unrelated scenario in our life, as well as with the advancement of technology as we feel. We have been able to perform all normal activities, especially education. Proper education today ensure bright future for the individual as well as for the nation. I would like to highlight my views on MIS. Before starting my slide, I'm just asked one thing. You think about a minute. What do you understand by e-learning? E-learning से हम समझते क्या हैं कि e-learning एक्चुअली में है क्या है? तो अगर बात करें कि e-learning जो है, e-learning is based on just formalized teaching. जैसे कि टीचिंग हम क्लासरूम में करते थे, सेम टीचिंग हम जो है घर बैठ के करें. जस्ट डिफरेंस ये रहेगा कि हमारी जो टीचिंग है, वो जो टीचिंग है वो आपकी कंप्यूटर और एज वेल एज आपकी जो है कंप्यूटर और आपके इंटरनेट पे बेस्ड हो गई है. तो वही हमारे पास ई लर्निंग है. अब ई लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हैं? तो स्लाइड्स शो हो रही है मेरी? No, ma'am. Kindly present your screen, ma'am. Yes, I'm presenting my screen, but they are not showing here. Yeah, ma'am. Now. Yes, MIS क्या है? हमारा एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एज ऑल वी नो. और इस चीज को जो हम यूज कर रहे हैं अपना डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं. और एवरी नॉट ओनली अगर हम बात करें स्टूडेंट ही नहीं बल्कि कोई टीचर है, कोई कॉमन पीपल है, वो भी इसको यूज कर रहा है. तो यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिया है, मेरा जो मेन रोल है वो है एजुकेशन सिस्टम के लिए. तो एजुकेशन सिस्टम में अगर हम इसको देखें तो हमें क्या करना होता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, देन आफ्टर इवेल्युएशन कर रहे हैं, उसके बाद उन चीजों को एनालाइज करके क्या हमारे पास कलेक्शन रह रही है, फिर उसका जो इफेक्ट है वो पीपल के ऊपर एज वेल एज स्टूडेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है वो हमारा रहेगा. नेक्स्ट कि उसका कितना जो है एफिशिएंट रिजल्ट हम गेट कर रहे हैं, ये सारा जो है हम एक MIS में यूज करते हैं, चाहे उसको हम अगर टेक्नोलॉजी के बेस में बोलें या फिर अपने कॉमन लाइफ के ऊपर बोलें. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यही है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इन सब चीज़ों का. बट इससे पहले जो मैंने ये टॉपिक चूज किया है कि इस टॉपिक के क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे हमारे लिए, वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी. पर उससे पहले ये
Due to some technical problem of the signal, ma'am will rejoin us within 1 minute. Madhuri ma'am. Yes, sir. जी मैम, you may continue ma'am. Okay, sir. तो ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, जो मैं बात कर रही थी कि हमारा जो 22 मार्च को जो है कम्प्लीटली लॉकडाउन हो गया और हमें जो है क्लासेस को भी कंटिन्यूटी में करना था। तो क्लासेस को जो कंटिन्यूटी में करना था वो एक बहुत ही बड़ी टास्क थी, क्योंकि तब तक जो हम चला रहे थे एक ब्लेंडेड प्लेटफॉर्म हम चला रहे थे, जिसमें हम ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों क्लासेस का यूज कर रहे थे। बट तब तक ये था हमारे माइंड में कि बिफोर दिस कोविड पैंडेमिक हमारे माइंड में ये था कि हम किसी एक चीज को लेके नहीं चल सकते हैं कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, हमें दोनों चीजों को साथ लेके चलना था। बट उसके बाद हमारे पास एक ऐसी टास्क हो गई कि हमें दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ा। सॉरी, हमें एक चीज को हमें ऑनलाइन पे ही प्रेफरेंस करके उसको आगे जो है कंटिन्यूटी में करना पड़ा। तो उसके लिए हमने जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है शुरू किए कि किस तरह से ये चीज शुरू की जाए। तो सबसे पहले जो है, जो उस टाइम मोस्ट फैमिलियर था सबके लिए, वो था व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप के थ्रू हम किस तरह से कनेक्टिविटी करेंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू हम जो है ज्वाइन हो सके, एक दूसरे से बात कर सके। तो व्हाट्सएप में जब लेक्चर स्टार्ट किए टीचर स्टूडेंट के बीच में, तो वो प्रॉपर चल रहा था, प्रॉपर बच्चों के पास नोट्स जा रहे थे, प्रॉपर कन्वर्सेशन हो रहा था। बट इस चीज में टीचर को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या आपका जो स्टूडेंट है वो प्रॉपर उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। उनकी जो कन्वर्सेशन अगर हम कह सकें तो वो जो कन्वर्सेशन है वो व्हाट्सएप में पॉसिबल नहीं थी एज अ होल क्लास, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप में एट अ टाइम जस्ट 8 पीपल हम ज्वाइन हो सकते हैं, उससे ज्यादा पीपल उसमें ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत ही मेजर सी टास्क थी उस टाइम। तो उसके बाद धीरे धीरे एनहांस किया, तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ एप्स अब आज की डेट में अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन स्टडी को कर सकते हैं। बट अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप ने एक नया फीचर भी अपना जो है डेवलप किया, वो भी 2 days बिफोर ही हुआ, वेडनेसडे को ही डेवलप हुआ, कि जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें आपको जो है, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे, भीम पे से करते हो या फोन पे से करते हो, वही आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो। उसमें जस्ट हमें क्या करना होगा, हमें अपना जो यूपीआई कोड है, यूपीआई कोड उसमें डालेगा एज यूजुअल अदर एप्स के थ्रू, और हमारा जो है ऑनलाइन पेमेंट की ट्रांजेक्शन है वो उसमें हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप के बाद, कि व्हाट्सएप में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हम इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने गूगल मीट का हेल्प किए। गूगल मीट में ये चीज पॉसिबल हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे पास जुड़ रहे हैं और उनके साथ हम वही एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं जो हम एज वेल क्लास में फेस करते थे, कि क्लास में और स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में हमारा प्रॉपर जो इंटरेक्शन होने लगा। तो गूगल मीट जो है बहुत ही वैल्यूएबल रहा, और आज तक इवन अभी भी हम सारे जो कनेक्ट हैं वो इसकी हेल्प से ही कनेक्ट हैं, और इसमें जो है हमारे बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट ये हमारे लिए क्रिएट कर देता है। ये भी बस मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया हुआ है, नेटवर्क के थ्रू मेरी स्लाइड्स तो नहीं यहाँ पे शो हो रही हैं, बट एक एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि गूगल मीट जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का। बट गूगल मीट में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें जो है मैक्सिमम हम जो है 100 पीपल एट अ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर हमने उससे ज्यादा पीपल को ज्वाइन करना है तो हमें क्या करना होगा कि पीपल को ज्वाइन करने के लिए हमें
डिफरेंट फर्दर सब ग्रुप्स के साथ हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम गूगल मीट में सब ग्रुप के साथ पीपल को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास 100 से ज्यादा जो है पीपल वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। देन अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद गूगल मीट के बाद, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, वो आती है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम की। माइक्रोसॉफ्ट टीम बहुत ही सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एज यूजुअल, जैसा कि हमें जो है गूगल मीट प्रोवाइड कर रहा है, बट इसमें जो है जो आपकी कनेक्टिविटी है नंबर ऑफ पीपल्स की वो ज्यादा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में जुड़ सकते हैं, और जो क्वालिटी है इसमें एक जो डिफरेंट फैसिलिटी है वो है हमारे पास ब्लैक बोर्ड की। ब्लैक बोर्ड की अगर बात करें तो हमें जो है जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है वो एक ब्लैक बोर्ड भी अपना प्रोवाइड करता है, जिसमें हम स्टूडेंट को, जैसे क्लास में होता है कि टीचर जो है मार्कर और बोर्ड की हेल्प से या चौक और बोर्ड की हेल्प से बच्चों को कोई चीज अंडरस्टैंड करवाता है, वो उसमें इजीली से करवा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गूगल क्लासरूम की। गूगल क्लासरूम और गूगल जो मैं बात करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम, दोनों सिमिलैरिटीज में वर्क करते हैं कि दोनों में हमारे पास क्या है कि जो हम डाटा यूज कर रहे हैं उसको जो है सेम वर्क रहेगा दोनों का, बट डिफरेंस यही रहेगा कि जो गूगल क्लासरूम है उसमें हमें फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर ही, हमें फ्री ऑफ ऐप हमें ये मिली हुई है। बट अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में हमें जो है हमें पेड सॉफ्टवेयर है, इसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी हम इसको आगे कंटिन्यूटी में कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ऐप की बात करती हूँ मैं, तो नेक्स्ट ऐप आती है हमारे पास स्काइप। स्काइप के थ्रू जो है हमारा जो काम है वो नहीं हो रहा था। स्काइप में जस्ट क्या है कि हम टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू फर्दर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ओनली अगर हमने बात करनी है तो वो स्काइप के थ्रू ही हमारे पास होगी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है वेबएक्स। वेबएक्स भी सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है स्काइप की तरह। वेबएक्स की जो मीटिंग है ये मोस्ट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वर्ल्ड की, for enterprising offering high security integrated audio video even content sharing from the Cisco WebEx cloud। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं क्लासेस ले रही हूं तो क्लासेस के लिए मैंने जो एनवायरनमेंट चूज किया था वो मैंने गूगल क्लासरूम चूज किया था। गूगल क्लासरूम सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है कम्युनिकेशन का। इसमें क्या होता है कि इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लासरूम को एज इट इज सेट कर लेते हैं जैसा कि हमने क्लास में किया हुआ है। क्लास में जो है स्टूडेंट जो है क्लास में क्या है कि जो स्टूडेंट है वो लोगो और कलर्स, जब क्लास स्कूल का लोगो हम उसमें लगाते हैं। क्लास को बेटर करने के लिए हम क्लास का जो है क्लासरूम नेम हम उसमें डाल सकते हैं, क्लासरूम नंबर उसके अंदर हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीयूज द असाइनमेंट टेस्ट कोर्स कंटेंट इन फ्यूचर क्लासेस। ये हमने जो असाइनमेंट्स बच्चों को दे रखी हुई हैं, उन असाइनमेंट्स को जो है जो असाइनमेंट्स हमने बच्चों को दे रखी हुई हैं वही असाइनमेंट्स जो है हम रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार जब हमने सिलेबस करवाया, सिलेबस के टाइम हमने बच्चों को असाइनमेंट्स अलग अलग असाइनमेंट्स दे दी, बट जब हमने उसका रिवीजन करवाना है तो उन्हीं फर्दर असाइनमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। वो जो असाइनमेंट्स हैं वो टीचर के पास एज वेल एज स्टूडेंट के पास, दोनों के पास अवेलेबल होगी। बट अगर हम क्लासरूम नहीं यूज करते या माइक्रोसॉफ्ट टीम का नहीं यूज करते हैं तो उन असाइनमेंट्स को हम मैनुअली बना रहे हैं, मैनुअली हमने कहाँ पे सेव किया हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना या उन चीजों की डिटेल बनाना एक थोड़ा सा मुश्किल सा टास्क रहता है। बट गूगल क्लासरूम में एक डिजिटाइज्ड हमें वे बता देता है जिसमें हमने डेट वाइज, टाइम वाइज जो है सारी असाइनमेंट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एड द कंटेंट असाइनमेंट्स सच एज द वीडियो, पीडीएफ, गूगल डॉक्स एंड गूगल फॉर्म्स अवे। ये जो भी असाइनमेंट्स हैं उसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है टाइम के अकॉर्डिंग, तो हमें कोई नई असाइनमेंट नहीं बनानी पड़ेगी, हम उस सेम असाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है अपना काम जो है फर्दर कर सकते हैं। वीडियोस शेयर इसमें कर सकते हैं, ऑडियो लिंक्स हम इसमें शेयर कर सकते हैं, असाइनमेंट्स को व्यू करा सकते हैं। अगर कोई असाइनमेंट है हमें फर्दर यूज करनी है जो अभी तक हमने नहीं यूज की हुई है, या फिर हमें लगता है कि अभी हमने असाइनमेंट बना दी कि बच्चों को पिछला टॉपिक नहीं आता है, हमें जो है जो सेम असाइनमेंट नहीं है उन फ्यूचर हमने बच्चों को देनी है, तो उस असाइनमेंट को हम क्या करेंगे फर्दर डेट के लिए अपने ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हैं। देन आफ्टर बाद में हम उस असाइनमेंट को बच्चों को दे सकेंगे। नेक्स्ट है हम गूगल कैलेंडर, जो मैं बता रही हूँ कि बच्चों को जो बाद में असाइनमेंट देंगे उसके लिए हम गूगल कैलेंडर का यूज कर सकते हैं। इसमें गूगल क्लासरूम के लिए बच्चों को ग्रेड्स, अगर बच्चों का जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम के लिए बच्चों को ग्रेड्स की जो फैसिलिटी है वो इसमें हम CSV फाइल बना देंगे। एक हमारे पास होता है कि तो हम इसमें गूगल क्लासरूम के अंदर बच्चों का टेस्ट ले लें, या फिर सेकंड जो टेस्ट है हम बच्चों का वो हम उसमें क्या कहते हैं गूगल फॉर्म में बच्चों का टेस्ट ले लेते हैं,
दोनों के अंदर हमारे पास CSV फाइल क्रिएट हो जाती है। CSV फाइल एज ऑलवेज कि हमारी एक्सेल की शीट्स क्रिएट हो जाती है, जिसमें हमारा सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो शो हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, सेट परमिशन ऑन द वेदर द स्टूडेंट कैन मेक पोस्ट और द कमेंट और द म्यूट इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि हमने जो क्या चीज पोस्ट करनी है। कई बार क्या होता है कि हम इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तरह तरह की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बीच में जो गॉसिप वो स्टार्ट करते हैं। वो जो गॉसिप है वो गॉसिप हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, वो गॉसिप जो टॉपिक चला हुआ है क्लास में उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो कुछ और ही गॉसिप स्टार्ट कर रहे होंगे। तो उस गॉसिप में वो क्या करेंगे, उस गॉसिप को हम जो है म्यूट कर सकते हैं, और टीचर जो है जब चाहे कि स्टूडेंट इस टाइम ही बात करे, उस टाइम में उस गॉसिप को वो कंटिन्यू में कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है कि गूगल क्लासरूम के को हमें स्टार्ट कैसे करना है। गूगल क्लासरूम को स्टार्ट करने के लिए हमने जो है सबसे पहले हम जो है गूगल क्लासरूम जो गूगल क्लासरूम के लिंक पे हम जाएंगे, या फिर एप्स में हमारे पास जो है गूगल क्लासरूम स्टोर होगा, वहां से हम इस चीज को ओपन कर सकते हैं। जो इसका जो लिंक है वो ये रहेगा हमारे पास। अगर हमें वैसे फाइंड आउट करना है, अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हम जो है http://classroom.google.com का यूज कर सकते हैं। और अगर हमने फोन के थ्रू इसको यूज करना है तो सिंपल ऐप में जाके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है एज अ टीचर जो है हम क्लास को ज्वाइन करा सकते हैं। जब हमने क्लास को ज्वाइन करवाना है तो इसमें क्लास को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर टीचर एज अ टीचर की बात करती हूँ तो टीचर क्या करेगा, पहले बच्चों से उनकी ईमेल आईडी ले लेगा कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपनी ईमेल आईडी हमें दे दें। फिर उन ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो जो टीचर है बच्चों को रजिस्टर करेगा। बच्चों को रजिस्टर करने के लिए वो एक लिंक शेयर करेंगे बच्चों की मेल आईडी में, बच्चा वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकता है। तो इसका ये बेनिफिट रहेगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपको वो चीज विजिबल है। और अगर बात करते हैं हम कि स्टूडेंट को कैसे ज्वाइन करना है, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है डायरेक्ट मेल में जाके उस चीज को नहीं ज्वाइन कर पाता, तो टीचर जो है क्लासरूम के साथ साथ उस लिंक के साथ एक कोड भी बच्चों को सेंड करते हैं। उस कोड के थ्रू भी जो है स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। गूगल क्लासरूम का ये बेनिफिट रहेगा कि हम यहाँ पे जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे कि बच्चा जो है जो भी चाहे काम करना वो कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं। जो आपकी फर्स्ट जहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्टिविटीज ऑफ द गूगल क्लासरूम, अगर यहाँ पे हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं। अलग अलग क्लासेस के अंदर जो है फर्स्ट क्लास में डिफरेंट जो टीचर्स हैं वो बैठ के अपना जो है बच्चों को दिख जाएगा। सब्जेक्ट वाइज जो है उनको गूगल क्लासरूम के अंदर जो है क्लासेस डिवाइड हो जाएंगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, साइंस जो भी उनकी क्लास है वो शो हो जाएगी। उसके बाद जो है वहाँ पे जो बच्चे को किस टाइम कौन सी क्लास लगी हुई है बच्चे की, वो क्लास जो है उस टीचर की क्लास में वो ज्वाइन कर सकता है। पर इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया होता है, अपना शेड्यूल्ड टाइम टेबल एक बना देगा हम कि इस टाइम आपकी कौन सी क्लास लगेगी, और टीचर को यही चाहिए कि वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर क्लास को ले। ये ना हो कि आप जो है क्लास कोई और ले रहे हैं, उसी टाइम सेम टाइम पे जो है आपकी सेकेंड क्लास ओपन हो रही है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी जो है डिफरेंट क्लासेस जो है पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग ही ले और टाइम के पंक्चुअल रहें। इससे क्या होगा कि हम टाइम के पंक्चुअल रहेंगे, एज अ टीचर टाइम का पंक्चुअल रहेगा तो स्टूडेंट भी टाइम के पंक्चुअल रहकर उस चीज को कंटिन्यूटी में करेंगे। आगे जो हमारे पास आ रहा है कि क्लास को क्रिएट कैसे करना है। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले क्लास का नाम कि कौन सा क्लास है, उसके बाद उसका सेक्शन, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट अगर मैंने ले लिया वो दे दिया। उसके बाद अगर हमारे पास एक ऑप्शन आती है क्लासरूम की, तो क्लासरूम हम जो मर्जी सेट कर सकते हैं 1 2 3। अगर स्कूल के अकॉर्डिंग बात करें या कॉलेज के अकॉर्डिंग बात करें, अगर हमने इकट्ठा होकर एक सिनेरियो बनाया हुआ है तो हम वहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। बट अगर हमने इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं बनाया हुआ है तो अपनी मर्जी से क्लास का कोई भी नंबर हम उस पर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है, नेक्स्ट है हमारे पास कि गूगल क्लासरूम में मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है क्लासरूम का, ये जो है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्टिविटी ऑफ गूगल क्लासरूम में ही मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें जो है मैं क्लास ले रही हूँ स्कूल में, उसी का एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, जो मैंने बात करी थी क्रिएट क्लास की। तो क्रिएट क्लास में मेरे पास आ गया कि क्लास का नेम रिक्वायर्ड चाहिए, उसका सेक्शन हमें चाहिए,
सब्जेक्ट चाहिए और रूम चाहिए, ये चीजें ऑप्शनल है, बट हम सेक्शन सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और सेकंड मैं ऑप्शन ले रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट मेरा फिगर यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने GIPS का ही लिया है क्लास का। तो यहाँ पे क्लास में मैंने किस दिन कौन सा टॉपिक करवाया हुआ है वो भी मेरे को डेट के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। तो मैंने कौन सी असाइनमेंट बच्चों को दी हुई है वो मेरे को यहाँ पे शो हो रही है। उसके साथ ही हमारे पास जो है गूगल क्लासरूम के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे मेरे पास आ रहा है कि बच्चों को क्या क्या चीजें हमने देनी है, लाइक असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस, मटेरियल, टॉपिक, रीयूज पोस्ट, जो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। असाइनमेंट्स की अगर बात करते हैं तो असाइनमेंट्स में हम जो है कि मैंने बच्चों को जो मटेरियल प्रोवाइड करना है, जो मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है बच्चों को, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दे दिए और उन असाइनमेंट्स को बच्चों को देने कि कितने दिनों के अंदर आपने सबमिट करवाना है। तो वहां पे हम असाइनमेंट जब बच्चों को मेंशन करेंगे तो वहां पे आ जाता है हमारे पास कि हमने जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो कब लेनी है, और नेक्स्ट असाइनमेंट जब हमने लेनी है तो उसके बाद किस टाइम पे वो हमें लेनी है, किस टाइम पे असाइनमेंट आएगी और किस आपका जो है डेट तक आपकी असाइनमेंट आनी चाहिए। अगर बच्चा उस डेट तक या उस टाइम तक अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करवाता है तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि पर्टिकुलर टाइम में बच्चे ने असाइनमेंट नहीं दिया है। सिमिलरली जो आपका टीचर स्टूडेंट है उसके पास भी ये मैसेज चला जाएगा कि उन्होंने जो अपनी असाइनमेंट्स जो है पर्टिकुलर टाइम पे नहीं सबमिट करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम इसमें पूछ सकते हैं, बच्चों के कुछ फर्दर क्वेश्चन है तो बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन एज अ टीचर टीचर्स भी बच्चों से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल जो भी टीचर बच्चों को मटेरियल दे रहा है, चाहे वो PDF की फॉर्म में है, ऑडियो, वीडियो या कोई लिंक शेयर किया हुआ है, वो इसमें सेंड कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चा जब स्टार्टिंग में मैंने ये चीज यूज की थी, बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इनविजिबल फोटो सेंड करने में टाइम लग रहा था। तो उसके लिए ज्यादा बेटर है कि जो भी आंसर शीट अगर बच्चा प्रोवाइड कर रहा है तो उसका PDF बना के दे दे। तो PDF बनाने के लिए भी हमारे पास जो डिफरेंट एप्स हैं, पहले जो है हम जो है चाइनीज ऐप का यूज करते थे, बट आज का जो आप यूज कर सकते हो डॉक स्कैनर का यूज कर सकते हो। डॉक स्कैनर की ऐप से आप इजीली से जो है अपना जो भी आपका मटेरियल है आपने भेजा टीचर को वो सेव कर सकते हो। गूगल क्लासरूम का एक और बेनिफिट ये रहेगा कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं, अगर मैं स्कूल लेवल पे बात करती हूँ, स्मॉल लेवल पे बात करती हूँ कि बच्चों ने टाइम से होमवर्क नहीं किया हुआ है, वो टीचर को कहते हैं कि मैम अपने हमें जो है होमवर्क प्रोवाइड कीजिए। तो उस टाइम अगर मैं व्हाट्सएप पे ही अगर इस चीज की डिपेंडेंट रहूँ कि व्हाट्सएप पे मैंने बच्चों को होमवर्क दिया है, तो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मेरे पास वो जो विजिबल नहीं होगा। बट अगर मैंने गूगल क्लासरूम के थ्रू बच्चों की वो क्लास ली हुई है तो गूगल क्लासरूम के थ्रू वो जो वर्क है वो मेरे पास विजिबल रहेगा और बच्चों को मैं उनके अकॉर्डिंग उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको टाइम टू टाइम जो है होमवर्क प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो गूगल क्लासरूम मेरे को लगता है कि बहुत सी बेस्ट एनवायरनमेंट है जो एक क्लास की तरह पूरा का पूरा एनवायरनमेंट फेस हमें कर सकता है। नेक्स्ट टाइम प्लीज। यहाँ पे भी कुछ एक गेम्स लिए हुए हैं मैंने गूगल एक्टिविटीज के ही, गूगल क्लासरूम के ही। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ये मेरे पास फर्दर मैंने एक्टिविटीज ली हुई हैं गूगल क्लासरूम की ही फर्दर एक्टिविटीज जो मैंने यहाँ पे शो कर रखी हुई हैं। यहाँ पे इस तरह से जो टीचर स्टूडेंट जो है वर्क करते हैं वो मैंने एक्टिविटीज शो कर रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गूगल फॉर्म। सर नेक्स्ट स्लाइड अप टू गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म अभी पिछली स्लाइड ही शो हो रही है, बट गूगल फॉर्म में क्या है कि गूगल फॉर्म में हम बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि टीचर ने बच्चों को अगर हम ऑनलाइन टेस्ट बच्चों का नहीं लेते हैं तो बच्चों ने जो है टीचर ने बच्चों को टेस्ट दे दिया व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और वे के थ्रू बच्चों को टेस्ट दे दिया, टीचर ने बच्चों को टेस्ट दे दिया। तो वहां पे क्या हो रहा है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर रहा है कि उनको टाइम लिमिट पता है, आंसर उनके सामने है, सबसे बड़ी फैसिलिटी इंटरनेट उनके सामने है, उनको ज्यादा फाइंड आउट करने की जरूरत है। जो उनकी अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि ई लाइब्रेरी हमारे पास प्रेजेंट होती है, तो गूगल जो है हमारे पास एक ई लाइब्रेरी का ही काम करती है जो हमें हर चीज के सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर देती है। तो गूगल फॉर्म के थ्रू जो है बच्चा गूगल फॉर्म में अगर हम बच्चों का टेस्ट लेंगे तो वहां पे क्या है कि आप अपने सामने बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। फर्क ये होगा कि आपको जब गूगल फॉर्म में टेस्ट क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे मैंने स्टेप्स दे रखे हुए हैं कि सबसे पहले फॉर्म लीजिए, फिर गूगल फॉर्म पे जाइए और आप वहाँ पे 2 चीज आएंगे मेरे पास कि आपको ब्लैंक फॉर्म लेना है या सर्वे हट लेना है। आपकी चॉइस है कि आप सर्वे हट पे कीजिए या ब्लैंक फॉर्म के थ्रू कीजिए। उसके बाद आप जो है फॉर्म
किस फॉर्मेट में आपने फॉर्म को लेना है। फॉर्म हमारे पास जो क्विज टाइप भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा जो एग्जाम है, जो फॉर्म है हमारे पास, वो क्विज एज वेल एज जो शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइम, किसी भी तरह का हमारे पास क्वेश्चन इसमें सॉल्व आउट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। जब आप फॉर्म यहाँ पे लेंगे तो आप बच्चों को सबमिट कीजिए और उसका टाइम लिमिट दे दीजिए, उनको बोलिए पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको ये काम करना है, तो बच्चा इस चीज को इजीली से कर सकता है उसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ गेम्स किए हुए हैं मैंने गूगल फॉर्म के ही, जो यहाँ पे कि किस तरह से गूगल फॉर्म पे हमारा जो टेस्ट नोटिफिकेशन रहती है, क्या क्या चीजें उसके अंदर हमारे पास आती हैं, ये कुछ उसके गेम्स हैं। अगर बात करते हैं गूगल फॉर्म की, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा उसमें भी जो है चीट कर लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या जैसे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम तो एडवांस हो ही रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि 2 डिवाइस अपने सामने रखें। अगर 2 डिवाइस हमारे पास सामने है, तो एक जो है एज ए इन्विजिलेटर बच्चे को सामने लुक करेगा, और दूसरे के थ्रू जो है बच्चा इजिली से अपने काम को फॉर्म आउट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन स्टडी के थ्रू कि हमारे पास जो डिफरेंट एप्स है, कि डिफरेंट एप्स के थ्रू हमने स्टडी कर लिया, और डिफरेंट एप्स के थ्रू ही हमने फाइंड आउट कर लिया कि किस तरह से हमें जो है वर्क को कंटिन्यूटी में करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब बोलना तो इजी हो गया कि challenges of MIS during online learning mostly by the students. बैक स्लाइड सर। तो क्या क्या चैलेंजेस अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट फेस करता है, तो चैलेंजेस उसके पास जो रहते हैं, सबसे पहले रहते हैं कि अडेप्टेबिलिटी ऑनलाइन स्टडी, कि जब बात करते हैं कि टीचर बोल तो रहे कि वो ऑनलाइन स्टडी स्टूडेंट कर रहे, तो ऑनलाइन जो स्टडी स्टूडेंट कर रहा है, तो क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या उस चीज को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जो चीजें बोला जा रहा है कि जहाँ एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट हमारे पास था, कि जहाँ पे एक टीचर सामने खड़ा हुआ है और स्टूडेंट उस चीज को कवर अप कर रहे हैं, वो चीज हो पा रही है, और एक उसको बोल दे कि घर बैठ के तुमने इंटरनेट ऑन करना है, वहां के थ्रू स्टडी करना है। तो ये बहुत ही मुश्किल था कि इस चीज को एक्सेप्ट करना, कि कैसे जो है हम ऑनलाइन स्टडी को एक्सेप्ट करें, कि यहाँ पे जो है टीचर जो है अपने आप को इतना, स्टूडेंट जो है अपने आप को इतना जो है प्रॉपर नहीं कर पा रहा था कि किस तरह से ऑनलाइन स्टडी को करना है। तो उसके लिए चाहिए कि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि जो स्टूडेंट है वो जो है पर्टिकुलर कंटेंट को जो इसमें स्टडी आउट करेगा। नेक्स्ट आता है टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू का अगर मैं बात करती हूँ, इसमें मैं भी फेस कर रही हूँ इस चीज को, कि इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, जो सेम मेरे साथ अभी हुई है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बात करते हैं इंडिया में, तो जो इंटरनेट का लेवल है वो सबसे कम लेवल है एज कम्पेयर टू अदर लेवल के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 चीजों को फॉलो कर सकते हैं, एक सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। 2 तरह की हम स्टडी को यहाँ पे कर सकते हैं। सिंक्रोनस में तो आ गया कि ठीक है, हम ऑनलाइन के बारे में हर चीज कर रहे हैं, उसको स्टडी भी कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बट अगर हम एसिंक्रोनस की बात करते हैं, तो हम उसी चीज को ऑफलाइन में कर दें, कि ठीक है, जो भी हमने टॉपिक लिए हैं, जो टॉपिक हमने स्टडी किए हैं, उसको हम जो है सेव करके, स्टोर करके या डाउनलोड करके रख लें, और इन फ्यूचर उन चीजों को हम यूज करें। नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है इसके लिए। अगर आपको नहीं है तो इसके लिए स्टूडेंट ये कर सकता है कि अपने टीचर के साथ या अपने गार्डियन के साथ इसके बारे में बात करे, और उसको जो भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर ले। टाइम मैनेजमेंट स्किल। अब टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर स्कूल की हम बात करें तो वहाँ पे एक प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ था, उस प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा था। बट अगर घर पे बात करें तो वो टाइम टेबल स्टूडेंट को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अगर क्योंकि वो सोचते हैं कि थोड़ी देर बात करेंगे, इस टॉपिक थोड़ी देर बात कर देंगे। या घर पे क्या होता है कि अगर मैं बात करती हूँ कि आजकल से ऑनलाइन स्टडी चली हुई है, जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, बच्चा सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास में बैठा हुआ है, तो 10 से 2 बजे की क्लास में अगर स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसमें नेटवर्क इशू भी तो आ रहा है, तो वो सोचता है कि इसको मैं बाद में कर लूँ, और वो बात कभी आता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना होगा। अगर हम खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हैं तो हम टाइम जो है बहुत ही इजीली से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आ जाती है जो स्टूडेंट इसमें फेस कर रहे हैं, दैट इज योर मिनिमल सोशल एंड इन पर्सन कॉन्टेक्ट। कई बार क्या होता है कि टीचर कुछ चीज करा रहा है और वो अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, तो साथ में अगर बच्चा क्लास में था, तो क्लास में वो जो साथ में वाले डेस्क में उसके साथ बैठा हुआ था, उसके आप पूछ सकते हैं कि अभी हमने क्या किया, तो जो चीज उसको घर पे नहीं हो रही है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत रहती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सेज ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट ऑलवेज बी इमीडिएट,
रिजनेबल और रिलायबल। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, ड्यूरिंग जो उनको प्रॉब्लम आ रही है उस टाइम वो टीचर से नहीं बात कर पाता, टीचर से नहीं पूछ रहा है कंटिन्यूटी में वाली क्लास में, वो उसको बोलते कि बाद में पूछ लेंगे, और बाद में जब स्टूडेंट पूछता है तो उसको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि मे बी टीचर के जो है वो क्वेश्चन को लेट चेक करे। अगर वो उनकी कम्युनिकेशन टेलीफोनिकली हो रही है तो ठीक है, साथ साथ उनको मिल जाता है। बट अगर वो बच्चा जो है उनसे ये पूछ रहा है कि व्हाट्सएप के थ्रू पूछ रहा है या मेल के थ्रू अपना क्वेरी डाल रहा है, तो क्वेरी का रिजल्ट कितने दिनों बाद उनको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो बच्चों को रहती है यहाँ पे। तो इसके लिए यही रहना चाहिए कि बच्चों का जो कम्युनिकेशन है, जो मैंने लास्ट पॉइंट लिया है यहाँ पे कम्युनिकेशन का, तो ये कम्युनिकेशन लेवल जो है टीचर और स्टूडेंट का बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए। ये ना हो कि बच्चा टीचर से बात ही नहीं कर पाया और उससे क्या होगा, उसकी क्वेरी ही सॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स को खुद को जो है अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं लाइक सोशल मीडियाज हैं, अगर तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो क्लास कर रहे हो तो उस टाइम जो आपका डिफरेंट मल्टीमीडिया है उससे थोड़ा सा खुद को डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाहिए, उन चीजों में नहीं मिलना चाहिए, उन चीजों में नहीं घुलना मिलना चाहिए। अगर आप एट अ टाइम क्लास कर रहे हो तो उस टाइम उस क्लास को ही फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वन है आपका लर्निंग स्टाइल। जो लर्निंग स्टाइल है वो स्कूल और घर का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। घर पे क्या है कि आपका जो एनवायरनमेंट है एज इट इज नहीं है जैसा कि स्कूल में था, जहाँ स्कूल में आपकी कैंटीन थी, पार्क थे, आपके स्कूल टाइम था कि इस टाइम कौन सी क्लास लगेगी, वैसे सेम एनवायरनमेंट घर पे नहीं है या स्कूल घर पे नहीं अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली अपने जो लर्निंग स्टाइल में उसमें भी तुम चेंजेस ला सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये तो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है चैलेंजेस फेस बाय टीचर। अब टीचर जो है डिफरेंट चैलेंजेस को फेस इसमें क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले आ रहा है जो टीचर जो रहता है कि एंगेजिंग द स्टूडेंट को किस तरह से एंगेज करके रखिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टूडेंट को किस तरह से एंगेज करके रखिए। तो स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए वो डिफरेंट मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं कि आपके जो अलग अलग मल्टीमीडिया हैं उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व करके रखिए कि ऑनलाइन लर्निंग के मेथड हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं गूगल क्लासरूम आप यूज कर रहे हो, आप स्काइप यूज कीजिए, आप जो है गूगल फॉर्म का यूज कीजिए। जो हमने डिफरेंट यहाँ पे मैंने कुछ ही जो एप्स के बारे में स्टडी किया था, मे बी इससे ज्यादा एप्स हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं ताकि जो है ऑनलाइन स्टडी जो है बच्चा जो है बिजी रहे, बच्चा एंगेज रहे उस चीज के लिए। और कई बार क्या होता है कि आप लेक्चर टीचर एज अ लेक्चर तो दे देता है बट बच्चा ऑन द स्पॉट उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, ना ही उस चीज को पूछ पाता है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट को ये चाहिए या इवन टीचर को भी ये चाहिए कि वो जो है हमारे पास एक्स रिकॉर्डर होता है या हमारे पास जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उस चीज का हम यूज कर लें। अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करते हैं तो क्या होगा कि जो भी हमारा लेक्चर हुआ है उसको जो है हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और वो जो रिकॉर्डिंग है वो इन फ्यूचर जब मर्जी हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमने पीछे बात की थी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, तो एसिंक्रोनस वे में हम उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है टाइम कमिटमेंट। अब जो कमिटमेंट बच्चों के साथ टाइम की हुई है कि आपको इस टाइम तक जो है ये वर्क मिल जाएगा, तो आपको उसी टाइम तक वो काम देना होगा, वो क्लास लेनी होगी। ये ना हो कि अभी टीचर बोल दे कि मैं बिजी हूँ या कुछ और वर्क है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। टाइम कमिटमेंट जो किया हुआ बच्चों के साथ अगर टीचर प्रॉपर उसमें करेगा तो बच्चा डेफिनेटली उस चीज में आएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लेवल मैंने पहले भी कहा था कि जैसे टीचर को जो है होता है कि बच्चे से बात करे, हेजिटेशन जो बच्चों का रहती है टीचर से बात करने के लिए, वो कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर इस चीज को कोई मैं पर्सनल लेने की जरूरत है, मैं जस्ट जनरली बात कर रही हूँ कि कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन में कुछ टीचर इस तरह से बात करते हैं कि बच्चा नेक्स्ट टाइम सोचता है कि नहीं इस टीचर को मैंने पूछना ही नहीं है, इनका जो बात करने का वे है वो कुछ अलग है, मैंने इनसे पूछना ही नहीं है। तो टीचर का जो कम्युनिकेशन वे है वो थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए ताकि बच्चा जो नेक्स्ट टाइम अगर उनसे कोई क्वेरी करे वो इजीली से और कंफर्ट जोन में कर सके। नेक्स्ट है फियर ऑफ चीटिंग। अब फियर ऑफ चीटिंग टीचर को रहता है कि जब वो बच्चों को एनालाइज कर रहा है, जैसे एनालाइज का हमारा रूल है कि एनालिसिस हमने करनी है, फिर उसके बाद हमने रिजल्ट निकालना। तो एनालिसिस के लिए बच्चा टीचर क्या करेगा, बच्चों को टेस्ट लेगा। तो टेस्ट लेने के लिए जो उसको फियर रहता है कि यार मैं टेस्ट तो ले रहा हूँ बट जो स्टूडेंट है सामने वो चीटिंग कर सकता है इस चीज से। तो उसके लिए बच्चों का आप डिसाइड कर लीजिए, या तो मैं जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑनलाइन फॉर्म गूगल फॉर्म के थ्रू हम इसको ले सकते हैं, बट सारे एग्जाम जो हैं वो ऑनलाइन नहीं पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स का करना है, आपने कुछ फिजिक्स की डेरिवेशन करनी है, वो चीज इसमें पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए चाहिए कि आप बच्चों को ये चीज कर लीजिए कि आप ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आप दो डिवाइसेस का यूज कर लीजिए, एक का कि जब कैमरा सामने ऑन होगा, सेकेंड डिवाइस में स्टूडेंट आपके बिल्कुल सामने बैठेगा और उस टेस्ट को करेगा, क्योंकि जो एक डिवाइस जहाँ पे कैमरा ऑन किया हुआ है
सेकेंड डिवाइस पे उसने क्वेश्चन पेपर अपना ओपन किया होगा। और इन्विजिलेटर जो है, इन्विजिलेटर भी अपना कैमरा ऑन रखे ताकि स्टूडेंट को ये लगे कि जो सामने बैठा हुआ है वो आपको देख रहा है। ऐसा ना हो कि जो स्टूडेंट टीचर है वो टेस्ट दे दे और टीचर जो है स्टूडेंट जो है वो उस चीज को अपने अकॉर्डिंग करे। तो अगर इन्विजिलेटर प्रॉपर वे से काम करेंगे, हम 2 डिवाइस स्टूडेंट को भी बोल दें कि रखने के लिए, तो ये चीज इजीली से हमारे पास सॉर्ट आउट हो सकती है। इवन कुछ स्कूल में या हमारे स्कूल में भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट एक चीज रह जाता है कि बेनिफिट्स जो है हमारे पास ई लर्निंग के, क्या क्या बेनिफिट्स थे। बेनिफिट्स से ये एक तो अकोमोडेट एवरीवन नीड, हर एक की नीड के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। लेक्चर जो है उसको किसी भी टाइम आप ले सकते हो। लेक्चर का ये नहीं है कि आपने अभी लेक्चर ले लिया तो नेक्स्ट टाइम अगर स्टूडेंट ने क्लास मिस कर दी है तो वो आपकी क्लास में नहीं प्रेजेंट हो पाएगा। तो अगर टीचर, जैसे मैंने बात किया कि वो टीचर जो है वो रिकॉर्डिंग लेक्चर के लिए स्टूडेंट को कहते हैं, टीचर जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर के लिए स्टूडेंट को कहते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है टू स्टूडेंट सुन सकता है। नेक्स्ट है ऑफर असेस अपडेट कंटेंट, कि आप सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों तरफ जो क्वेरी है वो चीज करें। क्वेरी डिलीवरी ऑफ लेसन, जो भी आपने लेसन किया है उसके क्वेरी आ रही है या उसको उसी टाइम सॉर्ट आउट कर लें, वो इसमें हो जाती है। स्केलेबिलिटी ज्यादा रहती है और कॉस्ट भी हमारे पास कम रहती है और ज्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट की, तो सबसे जो ज्यादा बेनिफिट है हमें ऑनलाइन स्टडी का वो है स्किल डेवलपमेंट। अगर जैसे बात करें कि अगर हम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, स्किल डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो स्किल डेवलपमेंट में ये रहता है कि हमारे पास अलग अलग साइट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे आपके पास कोर्सेरा है, एडेक्स है, इंटरशाला है, ये हमारे पास डिफरेंट जो है स्किल डेवलपमेंट की साइट्स अवेलेबल हैं। इन साइट्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स जो इनमें खुद को एंगेज करके, खुद को साइन अप करके जो है डिफरेंट कोर्सेज को एडप्ट करते हैं। अदरवाइज क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है मैक्सिमम कि स्टूडेंट्स को पता है कि उनको जो है किसी साथ वाले ने जो किया वही चीज उनको भी ओपन करनी है। वो हमारे यहाँ पे इंडिया में कहते हैं कि देखा देखी में जो है हम कोर्सेज को फॉलो कर देते हैं कि आपने ये कोर्स फॉलो किया है तो ठीक है, आपने मेडिकल रखा, आपने नॉन मेडिकल रखा, आपने कॉमर्स रखा, हम उस चीज को फॉलो कर देते हैं। आपकी चॉइस क्या है तो वो चीज नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हम जो है स्किल डेवलपमेंट की जो साइट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जो कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि आप जो स्किल डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा साइट को यूज करें। स्किल डेवलपमेंट का एक बेनिफिट ये भी है कि आज की अगर हम जनरेशन की बात करें तो वो जो है डिजिटल वर्ल्ड में इतना आगे हैं, उनको टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज होता है कि उनको कोई बताता नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो है उन चीजों को कर लेते हैं उनको। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया को हम ऑनलाइन स्टडी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो जो डिजिटल इंडिया को हमारे प्राइम मिनिस्टर बढ़ावा देना चाह रहे थे वो बढ़ावा भी इसमें ज्यादा जा रहा है और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। स्किल डेवलपमेंट अगर कोर्सेरा की मैं बात करूं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट transformation often starts with small in selection. Today they are enhancing the lives of millions of the people around the world. Free online short course, lecture, education, get a certificate. इसमें हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है अगर मैं इन सभी तीनों की साइट की बात करती हूँ तो इसमें 4000 प्लस कोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट जो है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें एनरोल होकर अपनी जो पॉकेट मनी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट लेके अपनी कोई भी पॉकेट मनी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ एक स्किल डेवलपमेंट साइट्स थी। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि ऑनलाइन लर्निंग जो है इससे जो है डिजिटल इंडिया को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है हमारे पास। जो हमारे जो पीएम जी का भी एक मेन मोटिव है कि हमारा जो इंडिया है वो अदर कंट्रीज की तरह जो है आगे से आगे डिजिटलाइज्ड वे में बढ़े। तो ऑनलाइन स्टडी में ठीक है पैंडेमिक टाइम था, थोड़ा मुश्किल टाइम था, कैसे इन चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, बट इसने एक चीज हमें सिखा दी कि प्रॉब्लम चाहे जो भी हो हम उस प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे और किससे सॉर्ट आउट करेंगे वो हमारे पास नंबर ऑफ जो है ऑप्शंस हम फॉलो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। आफ्टर दिस थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am. Now I am inviting Mr. Ranjit Thakur, Principal of Genius International Public School, Nechok, for vote of thanks. Over to Ranjit, sir. Sir, kindly unmute your mic, sir.
Hello. Yes, sir. Good Yes. afternoon. Now, All. Am I audible? yes, sir. Hello. Yes, sir. Now you are audible, sir. Okay. Very good afternoon, all. As all good things come to an end in life, so is the webinar. On behalf of now Abhilashi University and its unit, GIPS and CPS School jointly presented this webinar on role of e-learning in COVID-19. I, Ranjit Singh, principal of GIPS Nature, take this opportunity to propose vote of thanks to everyone to join this webinar. The emergence of the COVID-19 pandemic has led to a temporary close of university, college, school worldwide to fight the spread of coronavirus and maintain safe social physical distancing, affecting our millions of children and students worldwide. In this time of crisis, technology plays a vital role in creating fertile opportunity for transformation in teaching and learning. It's my privilege and honor to extend my heartfelt gratitude to Trustee Management to give this opportunity to conduct this webinar on topic that really matter on today's age and time. At the outset, I would like to welcome and thank today's special guest and eminent resource person, Dr. H.F. Sharma, State NS official, for expressing his view on role of e-learning in COVID-19. Thank you, sir, for enlightening our knowledge and give insights on role of e-learning in COVID-19. Thank you very much, sir. It's an honor and my privilege to welcome and thank our Honorable Chairman of prestigious Abhilashi Group of Institutions, Chancellor of Abhilashi University, Dr. R.K. Abhilashi, Managing Director, Chancellor of Abhilashi University, Dr. L.K. Abhilashi, to give this opportunity to organize this webinar and why your views and presence to make this webinar so successful. And thank you, sir, for your views on role of e-learning in COVID-19 and your views on technology and its importance. Thank you, sir, for raising this webinar. I would like to thank to Dr. H.S. Banyal, Vice Chancellor of Abhilashi University, for expressing his view on technology and its role in e-learning in COVID-19. Thank you, sir, for very innovative views and to make this webinar so beneficial to all of us. I would like to thank our school manager and CPS school manager, Mrs. Ankita Chaudhary, for expressing her views on topic pronunciation in English language. As correct pronunciation is very important in English language, especially in teaching profession. Correct pronunciation is must to ensure effective teaching and learning. Thank you, ma'am, to give insight on pronunciation skills. I also would like to thank Mr. Abhishek Kumar, Assistant Professor, Computer Science, Department of Abhilashi University, for giving his view on use of web technology to achieve financial freedom. As nowadays, technology plays a very important role in every field of life. It changed the whole world into global village. Thank you, sir, and to tell and to give insight on technology and to tell and explain how to make technology or convert to a source of income. Thank you very much, sir. I would like to thank Ms. Madhuri Bisis, PGT Computer Science Engineering International Public School, Nature, for her view on management information system. Thank you, madam, to enhance our knowledge how management information system is helpful and useful in education organization to ensure smooth functioning of organization, especially in pandemic COVID-19. Thank you, ma'am. Finally, I would like to extend my sincere gratitude to organizer Dr. Abhishek Sharma, NSS Coordinator of Abhilashi University. Thank you, sir. And also I would like to thank technical team for your cooperation and support to make it a successful event. At last, but not least, my deep sense of appreciation
And thanks to all participant audience who live with us and attended the webinar with great enthusiasm and made it successful event. Thank you very much. Once again, thank you everyone and have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Now, at the end of the webinar, COVID-19 is spreading in your community. Stay safe by taking some simple precautions such as physical distancing, 2 गज की दूरी है जरूरी, wearing a mask, avoiding crowd, and the check local advice where you live and work. Thank you all for joining us. Stay safe and healthy. Thank you very much.